सोल्स, आज कलेक्टिव के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. And I can show you the same in the screen. It's death, the three of wands, the queen of wands in reverse, the wheel of fortune. इनमें एक बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है. सबसे पहले तो डेथ का कार्ड आया है. ये कार्ड हमें डराने के लिए नहीं आया है, इसलिए घबराइएगा मत, बिकॉज डेथ जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज देता है. कलेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने पुराने चैप्टर्स को जो है एंड कर रहे हैं. कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं, कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, कुछ ओल्ड सिचुएशंस हैं जो हमें इतने टाइम से कैरी कर रहे हैं. अब उन्हें रिलीज़ करने का समय आ चुका है. एंड लायन गेट पोर्टल, which is often talked about by many, also exudes that sort of energy, also talks about the same. और डिवाइन गाइडेंस आपको ये कह रही है कि हर चीज़ को बचाया रखना ज़रूरी नहीं होता है. कुछ चीज़ें इसीलिए एंड होती हैं क्योंकि उनका पर्पस आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाता है. एंड यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टू मूव फॉरवर्ड. मतलब आपको कुछ फेथ रख के, कुछ यूनिवर्स पे फेथ रख के जो है एक कदम बस आगे लेना होता है. हर चीज़ को बचाए रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो डिवाइन के कंट्रोल में होता है. आपका काम सिर्फ आगे बढ़ते जाना है. उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आता है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी एनर्जी जो है अब बहुत ही तेज़ी से शिफ्ट होने वाली है. जो चीज़ें आपको पहले से स्टक फील कर आ रही थी उनमें मूवमेंट आ सकता है. सर्कमस्टांसेस आपके चेंज हो सकते हैं. लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन या ब्लेसिंग आपके जीवन में आ सकती है. और शायद कलेक्टिव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ. और हर चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. कभी कभी यूनिवर्स आपको एक डायरेक्शन देता है, एक डायरेक्शन से हटाकर दूसरी डायरेक्शन में ही डाल देता है. जब आप मोमेंटम गेन करते हैं या कोई आप लीप ऑफ फेथ लेके एक्शन लेते हैं और उस मोमेंट पर हमें समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले हम उसको ना एज्यूम करके, प्रिज्यूम करके कुछ भी नहीं कर सकते. बट लेटर इट ऑल स्टार्ट्स मेकिंग सेंस व्हेन इट हैपन्स. फिर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, as you can see it is in reverse. ये कार्ड एक वार्निंग जैसा फील होता है. कलेक्टिवली हम जेलसी, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और ईगो ड्रिवन बिहेवियर से बचने की ज़रूरत है. हम सभी को है. ये गाइडेंस आ रही है. कभी हम अपनी वर्थ को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. कभी हम अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम जो है वक्त से इन टर्म्स ऑफ टाइम हम पीछे चल रहे हैं. जैसे कि कुछ लोग हो सकते हैं वो सोच रहे हैं कि अभी तक उनकी जॉब नहीं लगी है, जबकि उन्हीं की एज ग्रुप के लोगों की जॉब भी लग गई है, शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया है. एंड कुछ लोगों के ऐसा होता है कि वो सोच रहे हैं कि अभी हम फाइनेंशियली उतने वेल ऑफ नहीं है, कुछ और लोग हो चुके हैं, या फिर कुछ और सेट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन जो है लोगों के दिमाग में चलता रहता है. हम देखते हैं कि किसी और की लाइफ कितनी फास्ट मूव कर रही है और फिर लगता है कि when will that happen to me, जो मैं चाहते हूँ वो चीज़ें मुझे कब मिलेंगी. लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स जो है आपको कह रहा है कि आप अपनी लाइफ को किसी और के लिए डिम नहीं कर सकते. आप अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ईच वन ने सबको अपनी लाइफ दी है और आपको अपनी वर्थ को प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने पावर में रहिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए. एंड फाइनली जब हम थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते हैं, as you can see थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हम आते हैं और यहाँ रीडिंग की एनर्जी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये कार्ड आपको बताता है कि अब हॉराइजन की तरफ हो. नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, यू आर थिंकिंग कि हाउ कैन आई बेसिकली टेक अ लीप ऑफ फेथ टू मूव फॉरवर्ड टू चेंज माई डेस्टिनी. पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उससे जो आपको शिक्षा लेनी थी, आपको लर्न करना था, वो सब आपने किया. लेकिन वहीं आपको रुके रहना नहीं है,
क्योंकि कुछ है जो होराइजन के बियॉन्ड आपके लिए जो है करंटली आप देख नहीं सकते, बट आपका इंतज़ार कर रहा है, और हो सकता है कि आपको अभी पूरा पाथ क्लियर भी ना हो, बट यू डोंट नीड टू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग राइट नाउ। बस एक नेक्स्ट स्टेप, एक नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ आपको लेना है। तो अगर इन 4 कार्ड्स का मैसेज एक साथ देखें तो डिवाइन गाइडेंस या फिर यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि पुराने चैप्टर को क्लोज करिए और व्हील ऑफ फॉर्चून यानी अपनी लक को टर्न होने दीजिए, अपने पावर को प्रोटेक्ट करके रखिए और फ्यूचर की तरफ आप देखना शुरू कीजिए, बिकॉज जो आपकी लाइफ को लीड कर रहा है मैं एक्चुअली बी क्रिएटिंग समथिंग फॉर यू दैट यू हैवंट सीन इट येट। English reading for my English viewers, the English reading is as follows. I would request you to take a deep breath and connect your energy to these cards. For English viewers also the message is the same, it's just the translation of this is the English translation of the reading. When we look at the cards that were drawn today for guidance from the universe towards what leap of faith or what step forward you have to take, we have the death, the wheel of fortune, the queen of wands reversed, and the three of cards. I'm holding the cards in my hand and will show you as we go ahead in the reading. The first message that we talk about is the death card, that is the transformation. The death card tells us that something has reached its end at the end of its natural cycle in your life, and this could be perhaps an old way of thinking, an old belief system, a relationship with the past, simply a version of yourself that you have outgrown. And the message is not to hold on just because something sounds familiar to you. Some endings are actually acts of divine redirection. Then we have the wheel of fortune card. Then we have the wheel of fortune card, as you can see right here in the screen. This tells me that the collective is now moving towards a turning point. Things that have felt stagnant may begin to move for you. Circumstances can change unexpectedly, so do not give up hope. Just keep moving forward. And what feels uncertain to you right now may eventually reveal itself as a part of a much bigger cycle for you. Circumstances may change unexpectedly, but do not be scared of it. What feels uncertain right now may eventually reveal itself in the due course of time, which may be a part of the bigger cycle, because the bigger picture can only be seen by the divine. We can only see a minuscule or very tiny bit of our life is visible to our eyes, and the bigger cycle is only visible to the God. Circumstances exchange unexpectedly, so do not be afraid of it. Trust the divine and keep moving forward. The guidance here is that trust the movement, even when you are not able to look at the bigger picture, you don't understand it yet. Then comes the Queen of Wands reversed. As you can see here, another card that has shown up while I was shuffling is that the Queen of Wands in reverse had shown up. This feels like a reminder that you have to be careful about comparison, insecurity, ego. Like it's very famously said that comparison is the killer of joy. So you'll have to let go of comparison and the misplaced power. There may be a tendency with the collective to look at someone else's journey and question your own. When I'm doing the reading, I don't know, somehow my nose feels itchy, so I feel that it might deeply resonate with someone, and that perhaps your spirit guides are very active and they are also indicating that this has been your tendencies, that you have been constantly comparing your journey with those of others, when everybody has their own life path, everyone has their own journey to explore, own destiny to explore. But your path isn't supposed to look like anyone else's. You don't need to compete for attention. You don't need to prove your worth. And you most certainly don't need to dim your light for someone else's light just to make yourself feel brighter. Your power becomes stronger when it comes from within. And finally, when we explore the cards more, we have the Three of Wands.
We have the Three of Wands card here. This is the card that is looking forward. It tells us that there is more beyond the current situation. You may not be able to see the entire path here. Entire journey is not divulged to anyone, remember that. But you can still choose to move forward on it. There is a sense of expansion here. Like a man is standing and is looking at the horizon, that is looking forward to something, deliberating that a step forward could lead to a better destiny. So there is a possibility, there is a sense that the collective is being encouraged to think about the immediate moment and start preparing for what comes next for them. So the overall message of these cards is quite powerful. Something old is ending, a new cycle of life is beginning. Don't lose yourself in fear, comparison, ego, and while everything is shifting, and most importantly, don't be afraid to look towards the future, because sometimes the universe closes one door not to limit us but to finally turn us towards the horizon that we couldn't see before. So, this was today's reading. It's requested to take what resonates and leave the rest, and allow the message to meet you wherever you are today. Radhe Radhe.